the gas expanded. Volume of the gas expanded. A इंटू डी यानी ऐसा है, देखो ये ऐसा, ये पिस्टन है, ये A है और ये D है. So area of the base multiplied by height is nothing but this. So the volume of the gas expanded. If this volume is V1 and final volume is V2, so area of the base, A into D is the volume of the gas expanded. So that is equal to V2 minus V1, and that is equal to delta V. So A multiplied by D is the volume of the gas expanded, and that is delta V. So A into D is what? Delta V. A into D is delta V. So W is what now? ये W का क्या हुआ वैल्यू अभी? W is equal to minus P external into delta V. So that is the work done. The gas. Okay. So it is, this is the expression for the work done against this. That is, work done is equal to external pressure into change of volume. V2 minus V1. V2 minus V1. If V2 is greater than V1, that means expansion. Delta V will be positive and W will be negative. If V2 is less than V1, that means compression. Final volume is less than the initial volume. Delta V will be negative and W will be positive. If V2 का value is greater than V1 का, final volume is greater than initial volume, then delta V will be positive. But W will be negative, because negative into positive is negative. If delta V2 is greater than less than V1, compression, delta V will be negative. Negative into negative will be positive. W will be positive. So this is the expression for the pressure volume type work. Okay, expression for. Work is done isothermally against constant external pressure. Okay, so ये है expression. Okay. Now next we are going to see work done in vacuum. Work done in vacuum. W is equal to minus P external into delta V. In vacuum, P external is equal to 0. Therefore, W is equal to 0 into delta V, and W is equal to 0. No work is done in vacuum. Work done in vacuum is 0. But is it possible that any work done in a vacuum is 0? The work done in vacuum is called, but vacuum के अंदर काम होता है. You go in the space. The astronaut floats in the space. Are they not doing any work?
You are doing work, but work done in vacuum is called free expansion. Why it is zero? Because P external is zero. वैक्यूम में कुछ प्रेशर ही नहीं होता, तो प्रेशर नहीं होता तो W जीरो आ गया. Work done is zero. Work done in vacuum is called free expansion. But we know that vacuum के अंदर काम होता है, स्पेस में काम होता है, but that work is called as free expansion. What is the unit of work? What is the unit of work? Joule. What is the unit of work? We'll see. Unit of work depends upon unit of pressure and delta V. Pressure, delta V, and W. If pressure is in atmosphere and volume is in liter, unit of work liter atmosphere. Liter atmosphere. Work is in liter atmosphere. Work, liter atmosphere can be converted into joules by multiplying by 101.3. And liter atmosphere can be converted into calories by multiplying 24.22. And calories can be converted to joules by multiplying by 4.184. Okay, second formula. If pressure is in Newton per meter square, and this is in meter cube, then work done is called Newton meter. Newton meter means joule. If the work done is Pascal, and this is in meter cube, it is joules. Pascal and ये एक ही होता है, both are same. If the work done is in kilopascal, then this should be in dm cube. You will get in joules. Okay, so these are the different units of work. The unit of work depends upon unit of pressure and unit of delta V. Okay, so अगर पास्कल में है तो डेल्टा V मीटर क्यूब में होना मांगता है. dm cube can be converted to meter cube by multiplying by 10 raised to minus 3. dm cube can be converted to meter cube by multiplying by 10 raised to minus 3. Okay, chaliye. So this was okay. Now let us see what is maximum work. Concept of maximum work. Work done at constant pressure is given by an expression W is equal to minus P delta V.
This is P external. If P external is equal to 0, work done is 0 into delta V, that is 0. If P external is increase, bolo, what will happen to the work? If P external is increase, is made more than 0, that means is increase, पर बढ़ते जा रहा है. P external is increase, what will happen? Value work done will increase. Do you all agree with me or not? अगर ये P external की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो वर्क की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. अगर वर्क P external 0 है तो वर्क डन इज 0. लेकिन अगर if you make more than 0, more than 0, more than 0, the work done will be increasing. If P external is greater than the pressure of the gas, what will happen? If P external is greater than the pressure of the gas, what will happen? बोलो ना. अगर बाहर का प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा. Compression होगा. The process will be reverse. Compression will take place. Therefore, maximum work is done when P external is infinitesimally greater than the pressure of the gas. Sorry. P external is in pressure of the gas is infinitely greater than the pressure of sorry, मैं उल्टा बोला. Maximum work is done when pressure of the gas is infinitesimally greater than the P external. What do you mean by infinitesimally? PG is infinitesimally greater. Greater than P external. जब pressure of the gas is infinitesimally greater, यानी थोड़ा सा ज्यादा than the external pressure, the work done will be maximum. देखो मैं वापस रिपीट करता हूं, ये वर्क का एक्सप्रेशन है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन इज 0. अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वर्क डन विल इंक्रीज. इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन गैस, बढ़ाते जाएंगे लेकिन पीजी से कम है. हाँ, पीजी से कम है. P external is increased but PG से कम है, but less than PG. But less than PG. The PG means pressure of the gas. Work done will increase. And this work external pressure is equal to pressure, या दोनों pressure equal होंगे, P external and PG equal. So there will be equilibrium.
Agar if P external is greater than gas, then the process will be reversed. Compression will take place. Therefore, maximum work is done when Pg is infinitely greater than the external pressure. And this condition, this process is called a reversible process. That means Pg is infinitely greater than the external pressure. That is called as a reversible process. कि reversible वो process वो है जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, या ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा बड़ा है. अब इधर ड्राइविंग फोर्स कौन है? Pg है. अपोजिंग फोर्स कौन है? एक्सटर्नल प्रेशर है. Yeah. So as therefore driving force is infinitesimally greater than pressure of the gas, than external pressure, that is opposing force. This process is called reversible process. Therefore, work done in reversible process is maximum. Is maximum. The work done in the reversible process is maximum. So we are going to see the expression for reversible, expression for maximum work. सर पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना. Expression for maximum work, or expression for work done isothermally and reversibly. Expression for maximum work, or work done isothermally and reversibly. See, so we'll derive that expression now. Sir, Okay. Let us see now the expression. sir, Consider n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with weightless, frictionless piston
at constant temperature T. So we are considering a gas n mole of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with weightless, frictionless piston at constant temperature T. Let P be the pressure of the gas. So I'll draw the diagram. Okay. P is the pressure of the gas. Let P be the pressure of the gas. And temperature is T. If the gas is to be expanded reversibly, then what is the condition necessary? अगर इस गैस को मुझे रिवर्सिबली एक्सपांड करना है तो क्या कंडीशन जरूरी है? बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? When the process is said to be reversible, प्रोसेस को कब हम रिवर्सिबल बोलते हैं? अगर इस गैस को मुझे रिवर्सिबली एक्सपांड करना है, क्या कंडीशन जरूरी है? एनी वन ऑफ यू ऑल? यानी इसका मतलब ये गैस को, अगर ये पिस्टन को मुझे ऊपर धकेलना है, गैस एक्सपांड होएगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे डायरेक्टली ऊपर नहीं भेजना है, मुझे रिवर्सिबली भेजना है. व्हाट इज दैट रिवर्सिबल? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड रिवर्सिबल? या कब प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं? जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से इनफाइनेटसिमली ग्रेटर रहेगा. ड्राइविंग फोर्स is infinitesimally greater than the opposing force. तो ड्राइविंग फोर्स कौन है? P. तो अपोजिंग फोर्स है कौन? बाहर का प्रेशर. If the gas is to be expanded isothermally, the driving force ब्रैकेट में लिखता हूं, प्रेशर ऑफ द गैस. P should be infinitesimally greater than opposing force. Opposing force means external pressure. बाहर का प्रेशर. P external. यानी PG बाहर के प्रेशर से थोड़ा सा बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस से कम हो रहा. Therefore,
एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना मांगता है? कितना मांगता है? प्रेशर ऑफ द गैस से कम होगा, P माइनस dP। बाहर का प्रेशर क्या होगा? P माइनस dP, यानी ये क्या है? अपोजिंग फोर्स। देखो प्रेशर ऑफ द गैस को रिवर्सिबली एक्सपांड करना है, the pressure of the gas should be infinite, should greater than the opposing force, that is external pressure, and therefore external pressure should be equal to P minus dP। जब एक्सटर्नल प्रेशर P माइनस dP हो जाएगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर P माइनस dP हो जाएगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो जब बाहर का प्रेशर P माइनस dP हो जाएगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। गैस विल एक्सपांड by volume dV, by volume dV। Therefore work done by the gas is equal to external pressure minus external pressure into change in volume। माइनस एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? P माइनस dP and change in volume dV। This is a work done, dW। जब बाहर का प्रेशर dP से कम करेंगे तो थोड़ा सा गैस एक्सपांड होगा एंड द वर्क डन विल बी माइनस P dP, P माइनस dP इंटू dV। ओपन करो, dW is equal to minus P dV plus dP into dV। dP and dV are very small, therefore dP into dV is negligible। Therefore dW is equal to minus P dV। dP and dV are very small, therefore dP into dV is negligible। जब दो समझो dP 0.2 है एंड dV 0.1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.0002 आएगा और कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में दिया। सो दिस इज द dV वर्क डन। रिवर्सिबल प्रोसेस में काम स्टेप बाय स्टेप होता है, तो पहले स्टेप में इतना हो गया। If the gas is to be expanded from volume V1 to V2, if the gas is to be expanded from volume V1 to V2, if the gas is to be expanded reversibly from volume V1 to volume V2,
the work done, the total work done will be sum of dw, sum of pdv, sorry, sum of pdv. हर स्टेप में इतना काम हो रहा है, तो रिवर्सल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है. इट टेक्स प्लेस एन नंबर ऑफ स्टेप्स. हर काम में इतना वर्क होता है. तो पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस पीडीवी, आई डोंट नो, V1 से V2 जाना है तो कितने स्टेप में होगा? We don't know how much, in how many steps the gas piston will move up when if the gas is expanded from V1 to V2. We don't know, but we can obtain mathematically. If the gas is to be expanded reversibly from volume V1 to volume V2, then total work done will be the sum of PdV. It can be obtained by integrating equation 1 between limit V1 and V2. ये इंटीग्रेशन, ये मैथ्स का पार्ट है. ये इक्वेशन 1 जो है, दैट इज अ वर्क डन इन वन स्टेप. और रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्टेप में नहीं होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है. इनिशियल से फाइनल जाने के लिए एक नंबर ऑफ स्टेप में, लेकिन हर स्टेप में इतना काम होता है. पीडीवी 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 पीडीवी, तो टोटल वर्क डन विल बी पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस पीडीवी. We don't know the number of steps, but we can find out the total work done by integrating equation 1 between the limit V1 and V2. So here, integration dw integration minus pdv between limit V1 and V2. And this is W0 to W max. Zero work to maximum work. Okay? तो इसको इंटीग्रेट करना है. ये कौन सा गैस है? This is ideal gas. This is ideal gas. Therefore, from ideal gas equation, PV is equal to nRT. P is equal to nRT upon V. The dW, W max is equal to integrating V1, V2 minus nRT upon V into dV. Constants are not integrated. तो इसमें 3 कांस्टेंट है. N, R and T are constant. They are not integrated. Constants को कभी integrate नहीं करते. No, N what? Number of moles. R is a gas constant. Temperature T हमने constant माना है. At constant pressure. So constants को integration sign से बाहर निकालते. So what you will get? Integration of dW. W is equal to 0 to W is equal to max minus N
minus r minus t integration v1 integration v2 1 by v into dv. ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे. Integration of dx is equal to x and integration of 1 by x dx is equal to log x. तो इसका क्या आएगा? Integration of dw will be equal to w upper limit w max, lower limit w0, nRT. Integration of 1 by v dv, integration 1 by v dv is similar to this. Integration of 1 by x dx log x. So integration 1 by d dv is equal to log v between upper limit v2 and v1. So W max minus 0 is equal to minus nRT log to base V minus log V1. This is natural log. Natural log means log to base E. इंटीग्रेशन में जो भी लॉग होता है लॉग टू बेस ई होता है, उसे कहते हैं नेचुरल लॉग. लॉग टू बेस ई को ऐसे भी लिखा जाता है कहां कभी कभी ln. ln का मतलब नेचुरल लॉग. तो W max is equal to minus nRT log A minus log B is equal to log A upon B. W max log टू बेस E को log टू बेस 10 में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करें. log to base E to convert it to log to base 10 multiply by 2.303. And this is the expression for maximum work. 2.303 nRT log to base 10 V2 upon V1. ये एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. From Boyle's law, which you have studied in 11th standard. P1 V1 is equal to P2 V2. This is Boyle's law का expression. P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. इसको सब्स्टिट्यूट कर लो. So W max is equal to ये माइनस है, ऊपर भी माइनस है, minus 2.303 nRT log to base 10 P1 upon P2. So ये दोनों एक्सप्रेशन है. These are the expression for work done isothermally and reversibly. टेक्स्ट बुक में ln दिया है, मैंने log to base E यूज किया.
ln और log टू बेस ई सेम होता है नेचुरल लॉग। ओके, now next what we'll see, work done in chemical reaction. Third, work done in chemical reaction. Work done in chemical reaction. Let's see work done in chemical reaction का क्या फॉर्मूला है. Consider a gaseous reaction, gaseous chemical reaction. Ag equal to Bg, where this is a product and this is reactant. At constant temperature and pressure, N1B, number of moles of gaseous उसको ऐसा नहीं करता. At constant temperature and pressure, work done is given by W is equal to minus P dV. W is equal to minus P V2 minus V1. नूरा आपा को तो बोलना पढ़ा रहे. Minus P V2 plus P V1 minus P V2 minus equal to P V1. Okay. From ideal gas equation, PV is equal to nRT. So PV2 will be equal to what? N2RT. And PV1 will be equal to N1RT. बोलेंगे सर आप T1 क्यों नहीं लिखते, इधर T2 क्यों नहीं लिखते और इधर T1 क्यों नहीं लिखते?
हमने टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट रखा, इसलिए वो इसे ही रखना पड़ेगा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करो। सो W इज इक्वल टू माइनस N2RT प्लस N1RT। कॉमन निकालो, माइनस RT, तो क्या रहेगा, N2 माइनस N1 and that is equal to delta nRT. What is delta N? Number of moles of gaseous product minus N2 minus N1. What is N2? Number of moles of gaseous product and what is N1? Number of moles of gaseous reactant. So this is expression for work done during chemical reaction. मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर ये रिएक्शन है तो इसके अंदर क्या वर्क हुआ रहेगा। मेन थिंग डेल्टा एन का होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये गैस है 1 मोल, ये गैस है 2 मोल, और ये सॉलिड है, सॉलिड को नहीं पकड़ेंगे। तो delta n is 1 minus 2 is equal to minus 1. So W is equal to minus delta n RT. Okay. So this is how we can get expression for work done. Okay. तो 3 हमने expression आज देखे, work done. Okay. Now we have to do sums on this. We are doing sums on this. उसके ऊपर हमें sums करना है। मैं देख रहा हूं कोई सम्स इसमें है क्या, है 1 2 3, 3 ही सम्स है बस। 4 4 4 5 5 क्वेश्चन है सम्स के। ओके, लेट्स सी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स।
न्यूमेरिकल्स में हमको 3 ही टाइप के फॉर्मूला यूज होंगे। वो है न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन, एंड वो है पहला फॉर्मूला वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। W is equal to minus P delta V. Work done isothermally and reversibly. W max is equal to minus 2.303 nRT log to base 10 V2 upon V1, or W max is equal to minus 2.303 nRT log to base 10 P1 upon P2. And तीसरा formula W work done in chemical reaction, work done during chemical reaction. W is equal to minus delta nRT. Okay. So let's see the first sum. Three moles of an ideal gas, 3 mole of an ideal gas are expanded isothermally from 25 dm³ to 40 dm³. At constant pressure of 1.2 bar. Calculate work done. Calculate work done in bar atmosphere, bar dm³ and joules. 2 यूनिट में काम पूछा है. 3 moles of an ideal gas expanded isothermally from 25 dm³. अब इसमें से 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है? P1 अपन P2 वाला सर. ये वाला? हाँ. कौन सा? सेकेंड फॉर्मूला? नहीं, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर यूज किया उसने, कांस्टेंट प्रेशर, तो पहला वाला.
ये जो वर्ड है ना रिवर्सिबल वर्ड, उससे ही हमको सर जिस सम में रिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला यूज करना। इसमें तो आइसोथर्मल ही है लेकिन रिवर्सिबली है क्या? नो सर। आइसोथर्मल का मतलब क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड डालता। कांस्टेंट टेम्परेचर मींस आइसोथर्मली। तो ये 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली, रिवर्सिबली नहीं दिया है, सिर्फ आइसोथर्मली। फ्रॉम 25 dm क्यूब टू 40 dm क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P डेल्टा V। सो सॉल्यूशन, pressure is 1.2 bar. Bar is a unit of pressure. Then V1 is equal to 25. V2 is equal to 40. Delta V is equal to V2 minus V1. That is 40 minus 25. That is equal to 15. Work is equal to minus P delta V. प्रेशर कितना है? 1.2. वॉल्यूम कितना है? 15. -18. माइनस कितना आएगा? 18. 15 2s are 30. 3 carry, 15 2 1s are 15 and 3 18. माइनस, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 18। क्या यूनिट रहेगा? प्रेशर का यूनिट बार है और वॉल्यूम के यूनिट डीएम क्यूब है। सो वर्क इज इन 18 dm बार डीएम क्यूब। तो एक तो मिल गया। अब इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो बार डीएम क्यूब को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना। 100 से मल्टीप्लाई करना। 1 बार डीएम क्यूब is equal to 100 joules. So 18, so multiply हो गया, माइनस 1800 1800 joules होगा। सो ये हो गया। किलो जूल्स में करना है, डिवाइड बाय 1000, minus 1.8 kilojoules. But they are not asked in kilojoules, so why to do in kilojoules? जूल्स में पूछा है तो जूल्स में आंसर दे दो। ओके, ये पहला सम होगा। नेक्स्ट, calculate the constant external pressure required to compress 2 moles of an ideal gas from volume
25 dm cube to 13 dm cube. When the work done or work done is 460 486.62.4 joule. Okay. अभी क्या करेंगे? जूल्स में calculate a constant external pressure required to compress the volume from this. So you know the work W is equal to 4862. Is it positive or negative? Positive. Why? Because it is compression. V1 25, V2 13 dm3. कौन सा वर्क है ये? प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क है कि आईएसओ मैक्सिमम वर्क है? कौन सा वर्क है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर वाला. देखो कांस्टेंट प्रेशर, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? W वर्क इज इक्वल डन इज इक्वल टू माइनस माइनस पी पी डेल्टा डेल्टा. वी। अभी डेल्टा V कितना है? V2 माइनस V1, 12 13 माइनस 25, minus that is equal to minus 12 dm cube. Okay, delta V is minus del. So work कितना है? 4862 joules. प्रेशर नहीं मालूम, डेल्टा V मालूम है -12. तो प्रेशर इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा, 4862.4 is equal to 12p. Positive minus into minus plus. So pressure is equal to 4862.4 upon 12. So you divide and see. 45.2। 12 नहीं, प्रेशर कितना है? सर ये 12 है ना? हाँ सर, 12 12 fours आंसर are 48, 45 12 आया। fours are 48, 6 कितना होगा? 5 जा 60, 60, 45, 2 बचा, 24 2 जा 45.2 वॉट. क्या यूनिट रहेगा? पास्कल। पास्कल नहीं, किलो पास्कल होगा. आई विल टेल यू व्हाई. वॉल्यूम डीएम क्यूब में, मैं वापस पीछे जाता हूं, रिवर्स. ये देखो, जब वॉल्यूम डीएम क्यूब में, इधर देखो, वर्क जूल में वॉल्यूम डीएम क्यूब में वर्क जूल्स में, तो प्रेशर किस में होगा? किलो पास्कल में. Okay, so answer will be in kilopascal.
किलो पास्कल, 45.2 किलो पास्कल। ओके, सो ये 2 वर्क हो गए। टाइम हो गया ना 6:30? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो बाय 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 सर, सर। थैंक बाय। यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।